है कुछ क्यों ना चल रहा है क्या या तो मेरे पास आ जा या मैं करूं तुझे दिल से दफा। Talha Anjum is one of the very few rappers who is loved by hip-hop as well as non-hip-hop audience. Even his most popular tracks are artsy and his underground hip-hop is consumed by a wide group of audience. And that's why जब Talha Anjum ने अपनी solo album announce की तो hype next level पे पहुंच गई और इसी वजह से Talha Anjum के solo project का सबको इंतजार था। खाना बदोश served as a trailer and उसकी वजह से hype एकदम next level पहुंच गई। But there's just one negative aspect of this pre-release hype कि आपके गाने बहुत भारी होने चाहिए ताकि वो आपके हाइप का वेट कैरी कर पाए बिकॉज अब आपकी एल्बम और आपके गाने इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड टू अदर एल्बम्स एंड अदर सॉन्ग्स बट रादर नाउ इट्स कंपेयर्ड टू द हाइप इन योर लिसनर्स माइंड। सो डिड ओपन लेटर मीट द एक्सपेक्टेशंस? हैंग इन देयर फॉर अ रिव्यू एंड अ फ्यू ईस्टर एग्स दैट यू माइट हैव मिस्ड। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूं, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूं। Anjum is one of the biggest artists in the scene and there is no surprise that his face is used in the cover art to sell this project to the masses. Also on the left side we can see a glass of alcohol. In other words, it is a glass half full जो कि एक गाने का नाम है from the album. Glass half full is an English expression जिसको ये बोलने के लिए डिनोट किया जाता है कि although हमारी लाइफ में कुछ चीजें सही कुछ चीजें खराब है but we are focusing on the positive sides. तो आधा empty है आधा full है but we choose to focus on the glass being half full rather than the glass being half empty. Glass half full एक गाने का नाम तो है ही एल्बम में, साथ ही साथ हमें हैप्पी आवर नाम के एक ट्रैक में ग्लास हाफ फुल का जिक्र भी सुनाई पड़ता है। ग्लास हाफ फुल, अब भी तुझे दिल का पूरा हाल नहीं सुना रहे हम। इसके अलावा कवर आर्ट में हमें अंजुम के हाथ में एक लेटर नजर आता है और वी कैन से ओपन लेटर नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कवर आर्ट में आपको पीछे शाम सनसेट का टाइम नजर आएगा, उसको इंग्लिश में डस्क भी बोला जाता है। देयर इज आल्सो अ ट्रैक इन दिस एल्बम कॉल्ड डाउनर्स एट डस्क। फाइनली राइट साइड पे आपको दो चीजें और नजर आएगी, एक है टाइपराइटर और एक है माइक, बोथ बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रैपर्स लाइफ बिकॉज पहले तो आपको रैप लिखना पड़ेगा फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, टाइपराइटर लिखने के लिए माइक परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप टाइपराइटर और माइक का डिजाइन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा दोनों ही बहुत ओल्ड स्कूल बहुत ही विंटेज लुक वाली इक्विपमेंट्स हैं, कन्वेइंग द फैक्ट दैट Talha Anjum's inspiration is drawn from the old school hip hop. All in all, a pretty decent album cover. Now let's move on to hidden Easter eggs. When I walk up to the scene, तो ये सारे बोलें king back, king back, king back. Now Easter eggs की बात करें तो I noticed something very unique and peculiar. बहुत सारे consecutive गानों के नाम opposite words से बन रहे थे, समझ नहीं आया? Let me explain. First track of the album is called Melancholy. Melancholy का मतलब होता है sadness वाली feeling. Second track of the album is called Happy Hours. Happy Hours का मतलब basically अलग होता है but melancholy, happy. Opposite words. Now at this point मुझे लगा कि ये coincidence भी हो सकता है. But then I reached the track number 3 and track number 4. Track number 3 is called At the Top. Track number 4 was called Touch Bass. Top मतलब होता है ऊपर, bass मतलब होता है the lowest point. Opposite words again. यहां पे भी बात खत्म नहीं होती है। एल्बम में एक गाना आता है Desperation. Desperation is basically a time जब आप बहुत ज्यादा अर्जेंसी में रहते हैं। उसी का नेक्स्ट गाना is Lost in Time, जहां पे आपको टाइम का पता ही नहीं रहता। Coincidence much? There's one more such example. Final two tracks of the album. The second last one is called Secrets, मतलब किसी को बताना नहीं है, and the final one is called Open Letter, मतलब ये सब के लिए। Pretty cool, right? और भी कुछ patterns हैं, उसके बारे में बात करते हैं। Throughout the album आपको pre-caps और callbacks सुनने मिलते रहेंगे। ये भी समझ नहीं आया, example के थ्रू समझाता हूँ। Talha addresses himself as Urdu rap's most deaf in a track called At the Top. Who hits the most licks में उर्दू रैप का most step वो मुस्तहिक slow case. 2 songs later in the track Studio Gangster he refers to himself as Urdu rap's most deaf once again. Please laugh at you boy, you must be joking. Urdu rap most deaf तुम कह लो short thing. Mos Def is basically an American rapper. Moving on, he talks about shutting down Lahore in the sense his show's shutting down Lahore in the hook of Touch Bass. Karachi mera even when I'm in Lahore. Touch bass. Shut a city down 30 minutes and I'm gone. And then a few songs later in two tone. Karachi mera, main aara city shutting down Lahore. He also flexes about how he partnered with rival competing brands Pepsi and Coke, once in a track called Flex and then finally in his track called Open Letter. Brands follow करें, I just pick and choose. Way too sexy for this, I got Coke and Pepsi too. और हाँ, priorities, अब मैं अंदर ही अंदर हंसूं जब वेटर पूछे कोक या पेप्सी। ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्री कैप्स और कॉल बैक्स आपको थ्रू आउट द एल्बम मिलेंगे बट आई प्ले द बेस्ट 3 फॉर यू नाउ। निटापी गोली गाने लिखे दिल पे रोगी इतने निटापी गोली मैन आई हैड टू कीप माय हेड राइट
यार किया था दफन यहीं कहीं, अभी टूटी तख्तियों पे उसका नाम ढूंढ रहा हूँ। मेरी दुनिया से सुलह भी अब नहीं होनी, जिंदगी कीमती लगी when I buried my homie। वो खींचे till I see a nosebleed, जानती इंडस्ट्री कौन पुश टी, who's pushing peas। मैंने पुश टी पर कोक पर भी रैप किया, ना इंसाफी नहीं किसी से भेजे पेप्सी वीजे। अब बात करते हैं प्रोडक्शन। उमैर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद मोस्ट ऑफ द बीट्स इन द प्रोजेक्ट। जोके ने एक गाना प्रोड्यूस किया हैप्पी आवर्स एंड वन ऑफ द सॉन्ग वाज को-प्रोड्यूस्ड बाय सुपर डुपर सुल्तान एज वेल। जोके का प्रोड्यूस्ड ट्रैक हैप्पी आवर्स हैड अ वेरी कैची and a bouncy beat. But the bigger surprise in the production for me was Umair's understanding of more serious toned songs. For example, Melancholy नाम के गाने में उस गाने की बीट की ब्रीफ छुपी हुई है, that it has to be sad, and the chord progression was chosen so well. उसके अलावा False Prophet गाने में जो थोड़ा यूनिक ड्रम पैटर्न यूज किया है, that also sounded refreshing. उसके अलावा आपको पैटर्न इन chaos टाइप के वोकल सैंपल्स सुनने को मिल जाएंगे in the track called Flex. Flex in your life है bro, pointed मिली मेरे mic पे bro। Although most of the beats in this project was heavily dependent on vocal samples, but I can easily ignore that because Umair ended up capturing the feel of almost every track. चाहे वो Downers at Dusk हो, Secrets हो, Open Letter हो, I can't even comprehend the fact that Umair has not even hit his 20s. Moving on. अब हम आ गए हैं towards the real meat of the video. How good was Talha Anjum and how good were the songs of this album? For me, the album starts off strong with the first two tracks and ends very, very heavy with the last three tracks. Last three tracks will definitely feature in my top 5 list from this album. But इसके अलावा a lot of the middle part of this album was filled with Talha Anjum's flex rap. We've seen Talha Anjum flex before in his rap songs, but here is where the album lagged for me. Sometimes what he was saying got a little repetitive. For example, the most hype track before the release of the album was Talha Anjum, Talhah Yunus and Krishna featuring track Touch Base. The track was good, not great in my opinion. In this song, lyrically Krishna had the best verse, but उनके vocals मुझे काफी substandard लगे. Is it because of the way it was recorded and the equipments used, or is it because of the post processing of the vocals? वो मेरे को नहीं पता. But Krishna's vocals sounded like उसमें low pass filter लग रखा है. You will see it when I play all the three verses one after the other. When I'm on the stage it's lit, चिच्चारों खाने रील शिट के आती हैं। लौड़े होते शार्ट लगे 2 दिन, शो स्टॉपर कौन तेरे सबसे बड़े शो के? UK clap पर बजेगी आंखों तालियां, हम थे in the trenches deeper than the Mariana। Now features की बात कर ही रहे हैं तो इस एल्बम का बेस्ट फीचर आया in the song Studio Gangster by this artist named Rap Demon. The energy in his vocals, the expression, the modulation, the lyrics and the way he caught the vibe of the track was commendable. Bigger stakes, bigger figures, liquor middle age, शेरों के टोले में किधर भेड़ चल निकल बे। Another good feature in this album was Talhah Yunus's feature in the song Half Glass Full. Half Glass Full का मतलब मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया था and वही मतलब आपको Talhah Yunus के वर्स में भी समझ आएगा where he tried to show you the duality in his life कि काफी कुछ सही चल रहा है but काफी कुछ खराब भी चल रहा है. Brilliantly written verse. For me the biggest and the most disappointing skip from this album would be the song called Two Tone. Disappointing इसलिए because इस गाने की बीट और लिरिक्स इंडिविजुअली बहुत सही थे बट जब उसको साथ में मिलाया गया तो बात बिल्कुल भी नहीं बनी. हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर, हाथ बांध छोटे हाथ बांध आए तेरे शहर तो लगा दे वहां 4 चांद. The vocal samples were loud and distracting and to perform a tight flow lyrical flex rap on this according to me was not a great idea at all. Generally ऐसी बीट्स को उन गानों में यूज किया जाता है जहां पे लिरिक्स पे आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं चाहिए होता या फिर जब लिरिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखना होता है तो ऐसी बीट चूज की जाती है जो लिरिक्स को बहुत ज्यादा ओवरपावर ना करे. Two Tone was Talha Anjum's comeback or retort to all the disses that he has been facing from the past couple of years from all the new rappers from Pakistan. And अगर यही बीट यूज की जा रही थी तो आई थिंक मिक्सिंग में थोड़ा और एफर्ट डाला जा सकता था to protrude Talha Anjum's vocals here. Talking about Talha Anjum's response to all the disses that he has faced in the last couple of years, the next track False Prophet is also a continuation of the same Two Tone, जिसमें वो बोल रहे हैं कि he has made a choice, he has made a calculative decision to not respond back because he values his legacy more than anything else. I cannot diss them just because what they did was a disappointment.
Legacy over everything, I think twice, सोची समझी choices. Now, this is a good time to talk about another peculiar observation that I had about this album. कि इस एल्बम के गानों के आउटरोज काफी लंबे हैं. कुछ गानों के आउटरोज 1 मिनट लंबे हैं, कुछ गानों के आउटरोज 20-20 सेकंड लंबे भी हैं. Why is that happened? I have two theories. One is that it could be a deliberate attempt at making the total playtime of the album reach this aesthetic number 55 minutes 55 seconds. And the second and more plausible reasoning is जब गाने की स्पीड थोड़ी बहुत शिफ्ट हो रही होती है तो लिसनर के कान को जारिंग ना लगे, इसलिए आउटरो दिया गया और आउटरो को फेड ऑफ किया गया है ताकि आपके माइंड से वो गाने का टेम्पो कुछ टाइम के लिए हट जाए और आप अगले गाने को अच्छी तरह सुन पाए विदाउट बीइंग रैटल्ड. मूविंग ऑन, पोएटिक ट्रैक्स में अंजुम का कोटेबल गेम हमें क्लियरली देखने को मिलता है एंड इट इज रियली गुड. कामपुरा का हुक वाज नॉट कैची, इट डिडंट स्टिक एंड फ्लेक्स वाज जस्ट ओकेश एट बेस्ट, नथिंग स्पेशल. डाउनर्स एट डस्क इज इजीली द बेस्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम फॉर मी. इट इज सोनिकली अ कंप्लीट सॉन्ग. गम बेहिसाब थे, अलग ही वफा के ज़ाब्ते, अलग ही हैं अगर मंजिलें. जिस फील के कॉर्ड्स है, उसी टाइप के ड्रम पैटर्न्स है, उसी टाइप के लिरिक्स है, उसी टाइप की डिलीवरी है. इट इज सो वेल डन दैट आई फील अगर कोई फॉरेन रिएक्शन चैनल इस गाने पे रिएक्ट करेगा विदाउट एनी सबटाइटल्स तो भी इस गाने की फील समझ जाएगा. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इनटू द प्लेस इन अ सॉन्ग. The song Secrets had the best hook in the album and I will not be surprised if it ends up becoming the audience favorite as well in the long run. And finally, talking about the outro and the title track of the album, Open Letter. Now, मैं कोई पहला बंदा हूँगा नहीं जिसको Open Letter Pakistan's answer to Eminem's Stand जैसा लगा होगा. Not only because both of these songs are talking about letters from fans, but the kind of conversation, जो भाई भाई वाली conversation हो रही है between the artist and its fan, and the kind of tonality that Talha Anjum has chosen in this track is very similar to Stan. I really liked the concept and writing of this track. The letter was unnamed because this is not directed to a specific person. This is Talha Anjum's response to every such Instagram DM that he gets. अब वो obviously individually किसको respond कर नहीं सकते, तो fans can listen to Open Letter and feel that they are having a one-on-one conversation with their favorite artist. This song had a lot of nostalgia and a roller coaster of emotions, and Anjum has written it so well that every listener would feel it. And इसी के साथ the review is over. Open Letter by Talha Anjum is seriously a good album, especially when it comes to poetic quotables and production. I can't deny the fact that it does have a couple of skips at least, but the album sequencing was done very meticulously by keeping the album top and superiorly bottom heavy. I also have to give Talha Anjum a few brownie points for not randomly adding a dance number that would end up increasing the overall stream of the album and sticking Open Letter theme of the album. इस criteria पे brownie points आपको सिर्फ DHH में देखने को मिलेंगे. And such was the performance of this album, although अच्छी चीजें were a lot more than बुरी चीजें. With that, the review comes to an end. अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो make sure you subscribe to my channel. I'm looking for sponsors for 1 Minute Rap Challenge Season 3. जैसे ही वो लॉक हो जाएगा आपको मैं अनाउंस करके बता दूंगा 1 Minute Rap Challenge Season 3 के बारे में. Also, don't forget to like or dislike this video. Give me a few video ideas in the comments down below. Also, you can follow me on Instagram. My handle is @ROHANCARIAPPA. Until next time, it's me Rohan Cariappa signing off. मैं जानू तू है परेशान पर मेरे बारे सोचा कभी क्या